सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आज का वीडियो फिजिक्स क्वेश्चन बैंक क्लास 11th सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन के ऊपर है। हमने प्रीवियस वीडियो में यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन अ प्लेन एंड वर्क एनर्जी इन पावर के सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिए थे, और इस वीडियो में सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन के सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। सो गाइस, वीडियो को बिना स्किप कीजिए देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। System of particle and rotational motion. Multiple choice question. The unit of moment of inertia is kilogram meter square. Moment of a force does not depend on the point about which to find the movement. The SI unit of angular momentum is joule second. For a rigid body to be in mechanical equilibrium, net external force and net external torque must be zero. Phillips, angular momentum is equal to linear momentum into perpendicular distance. I cap into j cap is equal to k cap. A vector into A vector is equal to 0. A body whose force does not change the distance between them even after applying force is called solid body. The vector multiplication order of vector obeys the rule of exchange. The combination of rotational speed and transfer speed is called rotational motion. One word. The point around which the total moment of gravity of a body is called center of gravity. At which particular point of the triangle does the center of mass of a triangle lie? Centroid of triangle. When will be the center of mass and center of gravity of a body not coincide? If the body is large such that g varies from one point to another, then center of gravity is offset from center of mass. What is the angle between the angular velocity of a rotating body and the linear velocity of a particular of this body? The angle between angular velocity and linear velocity is 0. If all the ice on the earth melts, what will be the effect on the time of a day on the earth? If all the ice on the polar caps of the earth melts and converted into water, then the water will flow away from axis of rotation, and hence the moment of inertia of the rotating earth will increase. The duration of the day will be more than 24 hours. Very short answer. Write the law of conservation of angular momentum. The law of conservation of angular momentum states that in the absence of external torque, the angular momentum of a system remains constant. That is, I omega is equal to constant. Write any two properties of vector multiplication of two vector. If the properties of vector multiplication, if you have two vector A and B, then the vector product of A and B is C. C is equal to A into B. So this A into B actually means that the magnitude of C is equal to AB sine theta, where theta is the angle between A and B and the direction of C perpendicular to A as well as B. Write the relation between angular velocity and linear velocity. Define angular velocity. So relation angular velocity is equal to velocity. Linear velocity is equal to angular velocity into distance. मतलब v is equal to ओमेगा आर. सो गाइज यहाँ पे आप एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन देख लीजिए. Explain the physical importance of moment of inertia in the rotational motion. The physical significance of the moment of inertia is similar to the mass in translational motion. In translational motion, the mass of a body is used for measuring inertia. In rotational motion, the greater the moment of inertia, the angular acceleration will require more torque. Question number 5. A wheel is spinning at 1200 rpm. Find the angular velocity in radian per meter. So guys, देख लीजिए इसका पूरा solution. What is center of mass? The center of mass of a body is the point where the entire mass of that body, this point is called center of mass. Short answer. So guys, वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए आप देख लीजिए what is pair of force or force pair. Establishing the formula for the moment of a pair of force. Give two examples of a pair of force in daily life. तो गाइस ये आंसर लिखा है इसका, यहाँ फॉर्मूला एस्टेब्लिशिंग हुई है और ये एग्जांपल्स लिखे. व्हाट इज रोलिंग मोशन? फाइंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी डूइंग रोलिंग मोशन. तो गाइस ये रोलिंग मोशन लिखा है, टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखी है. एस्टेब्लिशिंग द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क. तो ये पूरा रिलेशन लिखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क होता है.
ये child is standing on a rotating platform with both his arm outstretched. The rotational platform is rotated at 40 rpm. If the child folds his hand and multiplies his moment of inertia to the initial moment of inertia, then in this situation is find the angular speed. तो गाइस ये इसका पूरा सॉल्यूशन लिखा, आप देख लीजिए. To maintain a uniform angular velocity speed of 200 radian per second of a rotor, the engine is required to transmit the torque of 180 Newton meter. Find the power of engine given है omega is equal to 200 r रेडियन पर सेकंड, टॉर्क 100, पावर का फॉर्मूला टाउ इंटू ओमेगा. तो इसका आंसर निकल चुका. नंबर 6, अ सॉलिड सिलेंडर of mass 20 kg and radius 0.25 meter is rotating with angular speed of 100 radian per second. Find the rotational kinetic energy of the cylinder. तो गाइस देख लीजिए, गिवन है, ये फॉर्मूला है और इसका आंसर आया है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3125 जूल. एक्सप्लेन द रीजन वाई इट इज इजियर टू ओपन नट बोल्ट्स विद द हेल्प ऑफ व्रेंच. पहला है तो आप देख लीजिए, वाई द स्पोक्स आर इंस्टॉल्ड इन द व्हील ऑफ द बाइसिकल, ये भी इसका आंसर लिखा है. वाई इंजन इज फिटेड विद अ हैवी व्हील, तो गाइस इसका भी आंसर लिखा है. सो गाइस आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल में मैं डाल दूंगा, आप वहां से ले